Hello students, how are you? Hope all of you are fine at your home. I am Mrs. Manpreet Kaur, your SST teacher from California Public School. Yes dear kids, as you know that we have to doing the 10th chapter of 5th class weather and climate. And in the previous video we have to discuss about the what is the weather. So now today's date is 31st August 2020 and we are start to discuss next topic, that is the climate. What is a climate? Climate is an average of weather condition that prevails over a large area and for a long period of time, for about 35 to 40 years. Just like our season, same timing they have to be changed, that is season. Sometimes we have to say that today's hotness is too much, or say coldness is too much, that break out the record of 10 years, 20 years, that is the climatic change. Change after many years. The climate is a place remains more or less the same. Mostly same रहता, little bit change. Different parts of the world have the different types of climate. कहते world के हर एक type में climate is the different. So, on the basis of prevailing climatic conditions, the world can be divided into 7 major climatic changes. That is 7 major climatic changes we have to be divided. First, just like in the map, that brownish color very hot and wet. Where it is that region, hot and wet region. Then hot and wet. Greenish आ गया, hot or wet. Very hot or hot आ गया. Then yellowish, very hot and dry. Hot but dry. Then cool and dry. Purple आगे light purple, cool and dry. Then greenish, warm and wet. Warm भी है और wet भी है. Dark purple, very cold, and that in between the lines, that is the meridian. That one comes the meridian climate. So that is the climatic regions. So now we have to discuss about the factors that affect the climate of a place. In the previous India's climate at natural vegetation, here also we discuss about the factors. Now we also start the factors that affect the climate. Distance from the equator. Equator से हम कितना दूर है? As we move away from the equator, or we move towards the poles in both the hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere, the temperature would be the decrease. Near the equator, the sun rays are vertically and spread over a small area. कहते सन रेज वर्टिकली होती हैं और कम एरिया पर पड़ते हैं. सो प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, द सन रेज बिकम स्लांटिंग एंड कवर अ लार्ज एरिया. स्लांटिंग हो जाती हैं और लार्ज एरिया दे हैव टू बी कवर्ड. द प्लेसेस लोकेटेड टुवर्ड्स द पोल रिसीव लेस हीट. कहते जो प्लेसेस पोल्स के पास है वो बहुत कम हीट रिक्वायर करते हैं. Thus, the places at polar region are very hot. जो places are near to equator, these are too much hot. But the places near to the poles are very cold. Next, altitude, height. We know that the hill stations such as Darjeeling, Manali, Kodaikanal, these are the cool even the summer because they are on the height. उनकी height ज़्यादा है. So most of the peaks of Himalayas are covered with snow even during the summer. कहते summer season में Himalayas are the mountain ranges. कहते उसकी जो peaks हैं mostly covered रहती हैं. This shows that place is located at the higher altitudes. कहते higher altitudes है, height उनकी ज़्यादा from the sea level, are colder than the places located in the plains area, even if they are on the same latitude. Same latitude but उनकी height ज़्यादा है. That's why there is a cool temperature. So this is because the temperature decreases as the altitude increase. जैसे height increase होगी, temperature decrease होगा. So next is the distance from the sea. Places near the coast have the moderate climate. कहते जो places समंदर के पास है वो उनका climate moderate होता है throughout the year. क्यों? Due to the effect of sea breeze and land breeze. Because sand take less time to hot and less time to cool.
So on the other hand, places far away from the sea do not get the sea. कहते जो समंदर से दूर है और तब उनके पास सी ब्रीज और लैंड ब्रीज नहीं होती. सो they are very hot in summer and very cold in the winter. So such climate is called the extreme climate. बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होना, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होना. Next, direction of the winds. Winds bring the weather of the place from where they come. कहते winds को कौन सी साइड से आ रहे हैं, they have to be changed. Winds that blow from hot region increase the temperature of the place where they are reached. कहते अगर गर्म रीजन से हॉट रीजन से आ रही हैं, जहाँ पर वो पहुँचती हैं वहाँ का टेम्परेचर हाई कर देती हैं. इफ़ द विंड्स कम फ्रॉम द कोल्ड रीजन, अगर कोल्ड रीजन से आ रही है तो वहाँ का टेम्परेचर को लो कर देती है. While those blow from the cold region decrease the temperature. For example, Delhi is hot in summer due to the dry or hot winds that blow from. राजस्थान से जो winds आती हैं hot और dry होती हैं, तो दिल्ली में summer season में दिल्ली it's too much hot. In winter, cold winds from the Himalayas. cold winds आती हैं हिमालय से, जो northern part of India को बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर देती हैं. So the winds that blow from sea makes the coastal area cool and moist. कहते जो विंड समंदर से आती हैं वो कोस्टल एरिया को कूल और मॉइस्ट बनाती हैं. समटाइम्स ब्रिंग क्लाउड्स विद देम एंड कॉज रेनफॉल. कई बार क्या होता है, जो विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, क्लाउड्स हो जाते हैं तो रेनफॉल हो जाती है. नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल इज आल्सो इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. मॉइस्चर एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी. जो भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिड एयर कॉजेज रेनफॉल. प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉट एंड ह्यूमिड. कहते जो प्लेसेस हैं इक्वेटर के पास वो हॉट है और ह्यूमिड होती हैं. हैंस दीज प्लेसेस रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. ह्यूमिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है. नियर टू द इक्वेटर, और वी कैन से दैट ऑन द इक्वेटर डेली रेनफॉल नियर अबाउट 4 o'clock. सो एयर ओवर डेजर्ट डज नॉट हैव द मॉइस्चर. डेजर्ट के ऊपर कोई मॉइस्चर नहीं होता. सो दीज रिसीव वेरी लेस, और वी कैन से दैट नो रेनफॉल. सो वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर स्नोफॉल होती है. जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन व्हेन इट फॉल्स आल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. कहते हैं रेनफॉल का और सीजन का उस एरिया का क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. So these are the factors that affect on the climate. First one, distance from the equator. Second, latitude. Third, distance from the sea. Fourth, direction of the winds. And last one is humidity and the rainfall. Hope all of you have firstly listen it carefully, then read from your book. After that, do the assignment. So take care. Bye bye.